बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम डॉक्टर लुबना अयूब साहिबा, डायरेक्टर जनरल NIMS कराची, मिस्टर अब्दुल खालिक शेख, चीफ इंस्ट्रक्टर सीनियर मैनेजमेंट कोर्स, चीफ इंस्पेक्टर MCMC, members and NIM officers, participants of 32nd management course SMC, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It gives me an immense pleasure to be here, invited today to talk to you, and on this momentous occasion of graduation day of the 29 participants of 32nd seminar senior management course, and including one lady officer. So I think there should be more lady officers. There should have been more lady officers here. Anyway, आप सबको बहुत मुबारक हो। आज आप लोगों ने ये कोर्स बड़ी कामयाबी के साथ और मेहनत के साथ आपने इसको पास किया, and I am confident that this training must have extended merit opportunities and exposed you to learn the intricacies of public policy formulation and implementation, challenges of governance and development, so that you are well prepared in advance to tackle the challenges before taking up senior management and decision-making positions in federal and in the provincial governments. I profusely congratulate all the participants who have successfully completed their course in this institute and would soon be, inshallah, be promoted to grade 20 positions in their cadres. I would also like to extend sincere felicitations to Dr. Lubna Ayub Sahiba, the Director General, the Chief Instructor, SMC Faculty, for successful and befitting organization on the 22nd Senior Course Management at this Institute. अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब फर्स्ट डे आप इधर आई थी तो यहाँ मतलब बहुत से परेशान चेहरे थे, सब अपनी अपनी कुर्सियों से उठ के आए थे, पोजीशन से उठ के आए थे. There were people who sitting here in front of me, my colleagues, my friends, हमारे साथ काम भी करते रहे in different capacities. They've been enjoying good perks and privileges and positions in the government of Sindh and in the federal government. Definitely when somebody comes to the institute where one has to get training, so he comes back to his old days when he comes to the college or come to the school and the teachers will be there and things like that. पूरी ज़िंदगी का उसका एक सिलसिला घूम जाता है, लिविंग इन हॉस्टल, उठना सुबह, और मतलब मुझे यहाँ का पता नहीं, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सख्तियाँ भी होती हैं और चीज़ों की डिसिप्लिन होता है. सख्ती तो मैं नहीं कहूँगा, डिसिप्लिन होता है, which in the passage of time you all people, we all forget. क्या मतलब फिर दिन सुबह हम साहब बन के जाते हैं ऑफिसों में और मतलब वहाँ घंटी और PN और चाय और मतलब everything is like that. तो यहाँ आके मतलब one has to become the student again, and when somebody is a student, so a student is a student, वो तो फिर मतलब फिर टीचर के सामने तो स्टूडेंट ही होता है. तो डेफिनेटली आई थिंक NIM जैसे इदारे में आप लोगों ने आके ट्रेनिंग ली है, एंड जो कि मतलब जो भी रिसोर्सेज उनके पास थे, एंड आई नो आई एम इन द गवर्नमेंट सिंस many years and decades, तो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स होती हैं. So उसके बावजूद भी this institution has proved to be one of the most prestigious institute of the country. NIPA पूरे शहर में, पूरे मुल्क में मशहूर है NIPA. तो it was a NIPA जहाँ आप बैठे हैं, and I think कि यहाँ आपको जो उनका syllabus है, rich syllabus, and the teaching staff and the guest speakers must have given you the best of their experiences here, and they must have told you about their lifetime experiences and the policies and things like that. लेकिन
you all are mature people here, senior people, 19 grade में आप पहुंच जाते हैं बहुत साल लगा के. So you know all these things, and you have been going through different positions. कोई इनकम टैक्स सर्विस का है, कोई कस्टम्स का है, कोई पुलिस का है, कोई प्रोविंशियल सिविल सर्विस का है. DMGs के तो नहीं है इधर, हैं DMGs के भी हैं. So everybody is here. कोई म्यूनिसिपल सर्विसेज से एक्सपर्टीज़ लेकर आया है, तो कोई SNGD से एक्सपर्टीज़ लेकर आया है, तो कोई इनकम टैक्स से, तो कोई प्लानिंग से. तो मतलब ऑल माई फ्रेंड्स आर सिटिंग हियर एंड आई कैन सी दैट they have been working well, but this training will definitely inculcate and it will give you the brighter vision and things like that. And this teachers and staff here who have been teaching you, as Madam Lubna Sahiba said, that this institution is the oldest institution of the country, जहाँ से सिविल सर्विस के साथ ही ये मतलब शुरू हुए थे CSA लाहौर के साथ. And by the way, I must tell you, introduce you myself. मैं अभी तो politics में हूँ. This is I'm a minister for energy here, and this is the 8th tenure as a minister. I have remained minister for the 8 times. I was the minister for population, minister for revenue, minister for political affairs, minister for and sometime revenue, and now I am heading energy, minister for tourism for some time. तो ये different जो चीज़ें थी portfolios मेरे पास रहे हैं. And I have remained also as a federal state minister also for 3 years in previous governments. So I have this experience, but the actual experience to me comes from my civil service background. I was also a civil servant. I was from 11th Common DMG service. So I have served as a assistant commissioner, deputy commissioner, secretary in different capacities, as secretary health, secretary population, secretary agriculture, secretary to the chief minister. So I have served in different capacities. So वो जो background है मेरा, so that makes me very near and dear to you all in different groups here, sitting here, people here, no matter it's in customs. हमारे batchmates हैं, now they are mostly have been retired. और मैंने थोड़ी अकलमंदी की, I came into politics, politician never retire. So उस हवाले से I have remained there part of the service on which you are serving now. उस background पे I am working, I had worked already. So I know, जब आप मैडम ने कहा कि जब परेशान चेहरे मैंने देखे, तो हमारे चेहरे भी परेशान थे मैडम. जब हम गए थे सिविल सर्विसेज एकेडमी, तो वहाँ भी यही था कि क्या होगा, सुबह 6 बजे उठना. यहाँ तो नहीं होगा 6 बजे, वहाँ मतलब 6 o'clock लाहौर की सर्दी में one has to get up for the PT or exercises and training, and then in the civil service specialized training, horse riding. सुबह 6 बजे मतलब वहाँ वॉल्टन के मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, सर्दी शरीर परेशानी. बट दैट पास, नाउ वी मिस दैट. आपको भी ये मिस करेंगे, आप लोग भी ये चीज़ मिस करेंगे कि आप लोग यहाँ मतलब आए थे. दो इट इज़ 16-week ट्रेनिंग, लेकिन आपकी आपस में बॉन्डिंग, आपस में your interaction with different people will give you the much of the experience that is required for your future in grade 20 as a secretary and the DGs and in different positions. जो भी हैं मतलब मुख्तलिफ positions में रहते हैं. But in grade 20, most of you get the positions where you decide, you initiate, you formulate the things, and then you give your strategies. And this is the position you are going to, inshallah, coming to in the position of grade 20 officers. And I think this training will help you in that. And this interaction with the different groups will let you know that what is happening in other parts of the country, what is happening in other departments, what is happening in federal government, what is happening in the provincial government. You will come to know regarding that. And I must request you, Madam Lubna Sahiba, that these groups should have visited the energy department, because energy is the basic problem of the Pakistan. Energy resources, energy issues जो हैं पाकिस्तान के
बुनियाद ही वही है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की चीज़ों की, वहीं से होती है। अगर आप लोग उनको ले आते हमारे पास तो हम इनको बताते, दे शुड हैव नोन कि क्या हो रहा है एनर्जी सेक्टर में, एंड व्हाट सिंध गवर्नमेंट हैज़ डन, व्हाट फेडरल गवर्नमेंट इज़ डूइंग, और कहाँ कहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ हम थरकोल हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, वी वुड हैव टेकन देम देयर टू थर एंड उनको दिखाते। बहुत से लोग तो गए भी होंगे, यहाँ बैठे हैं हमारे दोस्त, दे मस्ट हैव विजिटेड, बट वी वुड हैव टेकन द ग्रुप एंड शोन देम व्हाट सिंध गवर्नमेंट हैज़ डन एंड किस तरह की वहाँ एक्टिविटी है, और पाकिस्तान की चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन थर। 2600 मेगावाट वी आर प्रोड्यूसिंग डेली एट द मोमेंट and contributing it to the national grid। और इसके अलावा विंड के हैं, कराची के पास हमारे 20-25 विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, और इसके अलावा सोलर के लगे हुए हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू फॉर्मुलेट द कोर्सेज मस्ट टेक देम टू एनर्जी डिपार्टमेंट। कोई भी होगा तो उनको बता देगा कि क्या हो रहा है मुल्क में, एंड दे शुड नो सर्कुलेटेड कहाँ से आता है, कैसे होता है, और what are our failures, what are our successes। so मतलब I request you, and आपने मुझे बात की कि regarding the provincial जो आपका institute है for the training, I will definitely take up this matter, this is very good suggestion, और this is a senior I would say institute to most of the institutes in the country, so they must take advantage of getting your knowledge, they must come here और आपस में interaction करेंगे। I will talk to the chief secretary साहब to arrange this thing कि people from our provincial institute, they should interact with this institute, and they can get better suggestions, better training, better उनके यहाँ से प्रोफेसर्स वहाँ जाएँ, वहाँ पढ़ाएँ, और वहाँ का कोई अच्छा है तो यहाँ के लेक्चर दे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि हम इसको करेंगे। आई विल टॉक टू चीफ सेक्रेटरी। और ये जो सिविल सर्वेंट्स यहाँ बैठे हैं, एवरीबडी एडवाइज देम, यू एंड शेख साहब ऑल्सो एडवाइज देम दैट दे मस्ट बी हम्बल, दे मस्ट बी वेरी कर्टियस टू द पीपल। दिस इज़ द बेसिक थिंग, एवरीबडी नोज। बहुत से लोगों को मतलब इन एनी वे लोगों से वास्ता पड़ता ही है। So this is our first and foremost duty to give courtesy to the poor people or anybody who comes to you. I will give you a little example. मैं हमारे मरहूम Prime Minister Zafrullah Jamali told me when I was Assistant Commissioner in Dera Murad Jamali, मतलब बहुत remote इलाका है and tribal area है. So when he came to my office, he used to come to my office and sit there for hours and hours and sit and call people and meet there. So when he saw me, he advised me one thing, okay, and that I have kept that advice in my life, and I always do that. I go with that advice. उसने कहा कि आपके पास जो लोग आते हैं उनके साथ आप बैठ के मिल रहे हो, कोई आ जाए तो उससे खड़े होकर मिलो, give him a warm welcome, so that he should feel comfortable, and then he can, आधा मसला उसका वहीं हल हो जाएगा जब आपसे इज्जत से मिलेंगे, उसकी बात सुनेंगे। तो मुझे हुआ तो उस दिन के बाद मैं जब भी मेरे ऑफिस में कोई आता है, आई नेवर शेक हैंड वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। किसी पोजीशन में भी हूँ और कोई भी आए, एटलीस्ट पोस्चर ही दे देते हैं हम कि हम आपसे उठ के मिले हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एंड लिसन टू देम, you may not solve their all problems, but listening to them gives them relief कि हमने बता दिया साहब को, हमने बता दिया वजीर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, अफसर को, डीजी साहब को। This gives them sigh of relief to them, and यही हमारा काम है, आपका हमारा काम है। मतलब गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है हमें to serve the people, and to serve honestly, serve humbly, serve with courtesy to the people, and this is our duty, this is our job, and beside whatever you can, politically compulsions तो बहुत होती हैं आप लोगों को, I know, हमें भी होती हैं, लेकिन जितना भी कोशिश कर सकें, मतलब whatever possible,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाते इन दिस सिचुएशन। और आजकल जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, यू नो कितनी पोलराइजेशन इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, दिस कंट्री इज पासिंग वेरी वेरी टर्बुलेंट टाइम्स एट द मोमेंट। एंड अल्लाह से हम दुआ करें कि ऐसा मुल्क जो है कहीं भी नहीं है। हम लोग मैं आप सब किसी न किसी अपना पोजीशंस में हम कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे अपनी कंट्रीब्यूशन हम लोग करते रहते हैं। तो हमसे कोई गलती हो गई है, हम किसी गलत ट्रैक पर चढ़ गए हैं। इतना रिसोर्सफुल मुल्क, इतना अच्छा मुल्क, इतने जहाँ चारों सीजन्स भी हैं, तो हर तरह का फसल भी यहाँ उगता है, तो यहाँ कोयला भी है, तो यहाँ सोना भी है, तेल भी है, तो मतलब हर चीज़ है यहाँ, मतलब अल्लाह की मेहरबानी से। बट वी हैव मिसमैनेज्ड, वी हैव मिसमैनेज्ड द थिंग्स कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि हम $1 बिलियन के लिए हम मारे फिर रहे हैं। वेरी अफसोस भी होता है, और अकेले में मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे हमें निकाले। और इसमें मतलब चाहते न चाहते हुए एवरीबडी हैज़ पार्ट टू प्ले। कहीं भी आप हों, आपकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होती है। तो यू बीइंग द सीनियर सिविल सर्वेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू, एंड हम खुद को भी कहते हैं, अपने कुलीग्स को भी मैं कहता हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग वी हैव डन with this country, with all these resources, with all these opportunities. We have not been able to put it on the track. We have lost the track. We must come back, otherwise we will be doomed. उसके बाद कोई आप देखें, हमारे दोस्त ममालिक ने भी कहा कि जी आप पहले IMF से आप बात कर लें। मतलब मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं देता, कहते हैं ना, साया भी साथ छोड़ जाता है। सो वी हैव टू वर्क हार्ड। अल्लाह हमारी मदद करेगा अगर हम अपनी मदद आप करेंगे तो। So you have all the big responsibility for the country at the moment. बड़ी सूरत हाल एक सीरियस है, ग्रेव सिचुएशन है, और पॉलिटिकली भी हम लोग लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। अल्लाह करेगा वो भी बेहतर हो जाएगा। सो दिस इज़ a very challenging time for you all people. Going back from here, and sometime you will be promoted, inshallah, posted on the post where you will decide, you will strategize, you will give new schemes, you will give new policies. So be humble, apply your mind, and take actions judicially, whatever you can take, and जितना भी मुमकिन हो सके। तो बातें तो बहुत करने की हैं, because I have a long career in politics as well as bureaucracy. So आज मुझे ये मौका मिला, and today I am here because Chief Minister was invited here as a chief guest. He was planning to come, and he had all the plans to attend this session and talk to you, but he had to go to Islamabad for the Apex Committee meeting. So he said, "Okay, you must go and talk to these young officers." I would call young officers because still you are young, and most of you are young, and inshallah you will contribute in the country's different sectors where you have been posted or you have been appointed. And with these type of training here, and with Madam Lubna and the staff of this and the faculty of this institute, they must have given you the proper training. I must appreciate whatever you talked here, whatever you spoke to the participants, and your friendly behavior, and you must keep on coming here. And as this is a linkage, whenever I go to Lahore, I always try to go to the Civil Service Academy, see my old, remember old days. This is a short training. We were there for a longer period, 1.5 years. But anyway, you have memories with here, with the staff, and we get into the interaction with the group you have met here, your friends, and inshallah, I hope and pray that you will play part, better part for the betterment of the issues for the people, for your governments. And I'm here. I'm your friend here. People in the
civil service still look up to me for, and they come up to me for the thing, they think that I belong to them. And yes, I belong to civil service. कोई कहते थे ना पहले कि कॉन्स्टिट्यूंसी किसी की आवाम है, कोई कहता है फ़ौज है, कोई कहता था ब्यूरोक्रेसी है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है. एंड फिर आवाम तो ही है, आवाम के वोट के बगैर तो नहीं हो सकता. दिस इज़ माई थर्ड टाइम आई हैव बीन MP है इन द प्रोविंशियल असेंबली. तो दुआ करें आगे भी कामयाब हों, और हम भी दुआ करते हैं आपके लिए कि आप लोग भी अच्छे अफसर, कामयाब अफसर बने और नाम पैदा करें, और यहाँ खड़े होकर फिर आप भी आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ. सो आई अगेन थैंक यू वेरी मच all of you, and especially the management, the Madam Lubna, and the management of the NIMS. And inshallah I will be keep in touch with you, and for any service, for any assistance, I am always there. So thank you very much, and wish you best of the luck. Thank you.